everyone, welcome to my channel Your Good Vibes Only, and I am really grateful and sending you a lot of good vibes. Thank you so much for supporting my channel. Thank you so much for supporting my Instagram. And finally I reached 1000 plus followers. Currently it is 1030 to be precise, and it's all because of you guys. So keep on following me and keep on liking my content. And today we are here to talk about a new exercise. Okay, this is my favorite one. And तो क्या होता है कि हम सबसे बड़ी चीज़ जो करना चाहते हैं लाइफ में वो होती है एक हैबिट फॉर्म करना. चाहे वो एक वॉक पे जाने की हैबिट हो, चाहे वो टाइम पे उठने की हैबिट हो, चाहे वो अपने मील्स खुद बनाने की हैबिट हो, बट वी टेक अ टाइम टू फॉर्म दिस हैबिट, and some of us really struggle to do it. So guys, the most important thing is, even if you are struggling, don't worry, I am here. I have your back. And just to get it a little logical, to give you a little logical loop of it, so the thing is, जब भी आप एक नई हैबिट फॉर्म करना चाहते हो, नेचुरली आपका ब्रेन इस तरह वायर्ड है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके और आपको कंफर्टेबल फील करवा सके. सो जब भी हम कुछ आउट ऑफ द कंफर्ट करना चाहते हैं, या जो हमारे ब्रेन को सिक्योर्ड नहीं लगता, इट्स अ चेंज, इट्स अ न्यू थिंग. सो सडनली इट बिकम्स, आई मीन इट इज़ अ न्यू मैसेज फॉर हिम. सो इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर इट टू grasp it. And in this duration, what our brain tries to do is, it tries to manipulate us so we can, he can talk us out of it, like that. So for an example, जैसे आप सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो, आई नो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो हम सब आजकल कर रहे होते हैं, कि हमें टाइम पे उठना है, हमें जल्दी उठना है. सो वी पुट एन अलार्म, वी गॉट इन टू अ हैबिट ऑफ पुटिंग अलार्म. बट नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट जब भी ये अलार्म बजता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस, कि वो स्नूज़ का बटन दबा देते हैं, एंड स्नूज़ का बटन दबा के वो फिर से सो जाते हैं. Now the intention of putting this alarm was totally this, that they wanted to, they wanted to form a new habit, and this habit was कि उन्हें टाइम पे उठना है, या उन्हें जल्दी उठना है, to make their day, to make their day good. They wanted to wake up early, or for n number of reasons, I don't know why, but if you wanted to wake up early, so I believe कि आपने भी experience किया होगा. So होता क्या है guys, कि आप जब बहुत टाइम लेते हो, your brain टॉक्स यू आउट ऑफ इट, क्योंकि उससे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है. बट इट्स अ बैड थिंग, राइट? इट्स अ गुड थिंग इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन इट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस. बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू फॉर्म समथिंग न्यू एंड इट स्टिल हैपन्स, देन इट इज़ अ ट्रिकी थिंग. सो हाउ टू चेंज दिस exercise will help you with that, and we call it a 5-second downtime exercise. Now डाउन टाइम 5 सेकेंड्स क्या होता है गाइस? रिमेंबर, जो बड़ी सी स्क्रीन पे हमें शायद मूवी देखते वक्त या कभी ट्रेलर देखते वक्त आता है 5 4 3 2 1. सो हमारे ब्रेन के पास भी एक डाउन टाइम होता है गाइस. अगर आप 5 सेकेंड लो, सपोज आपका अलार्म बज रहा है, चलिए यही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट एंड इट इज़ मोर रिलेटेबल टू मोस्ट ऑफ यू. सो सपोज़ आप सुबह उठना चाहते हो, आपने अलार्म लगाया है. अब अलार्म लगाने के बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कर रहा है, बिकॉज इट गॉट इनटू अ हैबिट ऑफ प्रेसिंग अ स्नूज बटन एंड गोइंग बैक टू स्लीप, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज, बिफोर प्रेसिंग दैट स्नूज बटन, the alarm is ringing. Now what you have to do is, as soon as you hear that alarm, start counting in your head 5 4 3 2 1. You are giving a 5-second window to your head. In this 5 seconds, you just have to get up from your bed, which is a first step of getting up actually. So just get up from the bed. Now you can use it in any other habit, like for exercising. If you are having this thought in your head that this is a time for me to exercise, give yourself a countdown from 5 4 3 2 1. Now within this countdown, try to start a first step at least, or put yourself in action already. Now what will happen is, अगर आपने already action में डाल दिया है,
तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा या आपको रोक नहीं पाएगा वो चीज़ या वो हैबिट फॉर्म करने से. So this is very effective because now what will happen is you will be actually able to form this new habit and new routine for yourself. So this is how it works, guys. Within this 5 seconds you have a window to form or to take an action to do a new thing or to form this new habit which you wanted to put in your routine. I have, let me tell you, मैं 7 चीज़ें करती हूँ in total day. I have 7 routine which includes a number of things. I will not bore you with that, but each thing which I do every day, I had to put this in my habit to make my routine better, make my day look better, and you won't believe I was able to achieve everything. Like today if you ask me, I can do all those 7 things without even putting any alarm or any notification. And you know why? Because I got the alarm set in my head. I made my brain believe that this is the day which I want to start with. This is how I want my day to look like, and this is what I want to bring in my daily routine. So this 5-second exercise worked wonderfully for me, and I can assure you that this will also work for you. So if you are looking for forming that new habit, guys, please try this exercise and share with the people whom you feel that they are struggling with forming these new habits. In this difficult time, we really need to plan our day. Like, we need to really take a time to calm ourselves because it has been a difficult time around us. So this is the best time, guys. It has given you a gift of time where you can find a new habit, you can form a new habit instead, and I'm sure that you will be able to do so with this 5-second downtime exercise. So guys, if you find any difficulty doing it, just you can DM me, you can mention in the comment. I will still help you out with this, and please try it. And thank you so much once again for today. This is all I have, and I will get back to you again with a new exercise. Have a wonderful day, guys, and thank you so much again for your all the support. Keep spreading good vibes. Bye bye.